Good evening student, welcome to Vanik smart class. सुबुझ तो आम आज किसी फिजिक्स क्वेश्चन डिस्कसन करिया वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन प्राय सब माने एग्जाम तुम काम दब सेमती नहीं तुम सीजीएल सब एग्जाम तुम जी कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर सब एग्जाम ये सब क्वेश्चन तुम काम दब तो तुम फास्ट गोटे गोटे वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कसन कर ये देखिए नहीं कमेंट देखो बिले फर्स्ट क्वेश्चन कौन कही if the radius of the earth were shrink by 1%, its mass remaining the same, the acceleration due to gravity on the earth's surface would be acceleration of the gravity would be if the radius of the earth were shrink by how much? Shrink by 1%. तामाने रेडियस कौन होची कमी होची से पचार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मत कह जी रो फॉर्मूला तुम जान कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर एंड व्हाट इज एम हियर एम टा होची मास ऑफ द अर्थ एम टा होची मोर कौन मास ऑफ द अर्थ mass of the earth and what is r here radius of the earth and what is g here universal gravitational constant right. So this is the relation between small g and capital G. Now you can see here clearly radius 1% कौन कोची डिक्रीज कोची ता माने r कौन होची ना कमुची तो जब r कमिबो ता माने व्हाट अबाउट द g वैल्यू तो g वैल्यू कौन हो बढ़ी जिवो g वैल्यू कौन हो बढ़ी जिवो क्लियर और नॉट ता माने एटा कौन हो ऑप्शन कौन हो b इंक्रीजेस ऑप्शन कौन हो b इंक्रीजेस ठीक है तापर देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहला द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम व्हेन टेकन टू द मून वुड बी द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम पहले देखो ये होची मोर सिंपल पेंडुलम ये होची मोर कौन ना सिंपल पेंडुलम रो टाइम पीरियड ऑफ फार्मूला होची कौन ना t इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाई G बुझेला कि नहीं टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम तार फार्मूला होची कोन t इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ L बाई G से कोई जी द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम व्हेन टेकन टू द मून त मते को दीटा जिंस अछि तम मते को अर्थ रे जदी ये होची मोर अर्थ एवं ये होची मोर मून मते को अर्थ रे जीरो वैल्यू होची केते ना सर अर्थ रे जीरो वैल्यू होची 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होची अर्थ रे जीरो वैल्यू मते को जदी मो ए जो सिंपल पेंडुलम अर्थ रो नै जिबे कोठी मून को ताहले मते को जीरो वैल्यू एट मून केते ना g ऑफ अर्थ डिवाइड बाय केते 6 g ऑफ अर्थ डिवाइड बाय केते 6 ता माने मते को एठी बेसिकली मून रे जीरो वैल्यू कौन होची कमुची तो मते को जीरो वैल्यू जदी मून रे कमी जाउची ताले g एठी कमिला माने व्हाट अबाउट द टाइम पीरियड तो टाइम पीरियड बढ़ी जाउची टाइम पीरियड कोन हबो बढ़ी जा काहे की हियर टाइम पीरियड g सहित कोन ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यस और ता माने जदी जीरो वैल्यू कमिबो t रो वैल्यू कोन बढ़िबो क्लियर और नॉट तापर कहै क्वेश्चन ताले एटा कोन हबो ना g कमिला माने तो मून रे जी वैल्यू होची कौन कम तो सेति पई टी कौन हबो बॉडी जीवो तो एरा हबो कौन इंक्रीजेस ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 को आसा तापरे
क्वेश्चन नंबर 3 कौन कहूची से सिंपल पेंडुलम रो क्वेश्चन डा कहूची व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर ऑन द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम so this is a simple pendulum now this is a simple pendulum now this is called a string आपको हमें कौन कहवा स्ट्रिंग बोली कहवा एवं आपको कहा जाए बॉब्स आपको कौन कहा जाए बॉब्स बोली कहा जाए बॉब बोली कहा जाए ठीक है चलिए अच्छा मत कह हमर जो स्ट्रिंग जो अच्छी स्ट्रिंग तैयारी कोते ना मेटल ले तैयारी था बेसिकली कोते तैयारी था मेटल ले से कहूची व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर ता माने टेम्परेचर जदी बढ़िबो ताले व्हाट अबाउट द टाइम पीरियड ता माने टाइम पीरियड कोन हिजो देखो एटी मते को हमर फार्मूला कोन ना t = 2 पाई √l/g ता मते को जदी मोर टेम्परेचर बढ़ुची ताले स्ट्रिंग रो जो लेंथ अछि ये स्ट्रिंग रो लेंथ भी बढ़िबो ता मते को जदी स्ट्रिंग रो लेंथ बढ़िबो ताले मते को l बढ़िला माने t रो वैल्यू कोन हबो बढ़िबो t रो वैल्यू मते कोन हबो बढ़िबो ताले मते को एठी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ता माने टेम्परेचर बढ़िला माने लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कोन हबो बढ़ी जिवो और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बढ़िला माने व्हाट अबाउट द टाइम पीरियड तो टाइम पीरियड भी कोन हबो बढ़िबो ताले एटा कोन हबो इंक्रीजेस एटा कोन हबो पिले इंक्रीजेस हला तबरा से क्वेश्चन नंबर 4 तबरा से क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन ऑफ 4 कौन को देखो कहला लेट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज ve एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ केते ve मते को फास्ट कहि दो मते एस्केप वेलोसिटी फार्मूला कोन ना एस्केप वेलोसिटी फार्मूला होची ना √2gm बाई केते r √2gm/r मते को लेट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज v व्हाट वुड बी द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट व्हिच मास एंड रेडियस इज डबल फ्रॉम द अर्थ ता मान लियो ये होची हमर अर्थ ये हमर होची अर्थ तो अर्थ रो मास केते ना मास ऑफ द अर्थ दैट इज me रेडियस केते ना रेडियस ऑफ द अर्थ दैट इज re नाउ एस्केप वेलोसिटी फॉर द अर्थ केते हिजबो दैट इज v इज नथिंग बट फार्मूला कोन ना √2gm बाय केते r दैट इज नथिंग बट 11.2 किलोमीटर पर सेकंड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हमर एटा आसीबो अच्छा एबे मते को आउ गोटे न्यू प्लैनेट अच्छी न्यू प्लैनेट रो मास हमर अर्थ मास रो केते गुणा ना सर 2 गुणा तार रेडियस अर्थ रेडियस रो केते गुणा ना सर 2 गुणा तार मते को तार एस्केप वेलोसिटी केते होबो इडा से पचारछि ताले मते को एस्केप वेलोसिटी केते होबो ना सर एस्केप वेलोसिटी फार्मूला कोन ना सर एस्केप वेलोसिटी v डैश रो फार्मूला कोन हि जिवो ना √2gm डैश बाई केते हि जिवो r डैश ताले मते को एठी 2g m डैश जगह कौन पुट करी 2me डिवाइड बाय कौन हो 2re कहीं की बिकॉज कहीं की ना मोर जो अर्थ रो जो न्यू प्लैनेट से होची न्यू प्लैनेट रो मास और न्यू प्लैनेट रो रेडियस अर्थ रे केते गुणा 2 गुणा तो सेति में या करा हला ताले मते एटी गुटा था को ये 2 गेट कैंसल्ड रहिला कौन ना सर रहिला 2 me बाई केते आसीबो r मते कोई जो 2 तो रहिबो ने एठी आसीबो कोन g 2g me बाई r मते कोई जो 2g me बाई r का से समान होची ना सर v सहित समान होची का से समान होची v सहित समान होची ता माने या अर्थ रो एस्केप वेलोसिटी जहा ये न्यू प्लैनेट रो एस्केप वेलोसिटी कोन हबो से हबो दैट इज नथिंग बट 11.2 किलोमीटर पर सेकंड सरला बिले
ताले मते को एटा क्वेश्चन आंसर कोन हबो ना ए इज द आंसर करेक्ट ए इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि तापर आसीबा क्वेश्चन नंबर 5 देखो बोला क्वेश्चन नंबर 5 कोन करछि व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून मते को एबे तुम टिके आगु कहली द एस्केप वेलोसिटी ऑफ फार्मूला कोन ना 2gm बाय कोन r तामरे एठी मास ऑफ द मून जदि हम पके दबा रेडियस ऑफ द मून जदि पके दबा एवं ए g रो वैल्यू तुम जानि छ 6.67 into 10 to the minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केते kg स्क्वायर पके देला पर हमर केते वैल्यू आसीबो ना मन रखियो 2.35 किलोमीटर पर सेकंड ताले एस्केप वेलोसिटी फॉर द मून एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून केते ना 2.35 किलोमीटर पर सेकंड but escape velocity of a planet any planet escape velocity for any planet काढियार फार्मूला होची को ना that is escape velocity equal to 2gm by r रो रूट ओवर क्लियर नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 6 कोन को देखो क्वेश्चन नंबर 6 को जी the ball is thrown off the velocity the value of g will be जदि बॉल टा बाई मोर हाथ रे धरछि जो हमर पेन ए पेन टा कुंदा जो ऊपर फोपाली तार मते को आर जी वैल्यू बा जी वैल्यू केतो हबो मन रखियो हमर सब एक्सेलरेट हम जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बा जोटा ग्रेविटी हमें कहबा व्हाट इज ग्रेविटी द ग्रेविटी इज द व्हाट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट नियर द अर्थ एंड नियर द अर्थ सरफेस बुझिला कि ताको हमें कहबा ग्रेविटी बोली कहबा ताले जो ग्रेविटी सबले मन रखियो सबले डाउनवर्ड डायरेक्शन सब होची कोन डाउनवर्ड डायरेक्शन क्लियर एबे जदि कोन सुटे बॉल टाकू बा कोन सुटे ऑब्जेक्ट टाकू तमे कोन करिवो ना ऊपर फोपाडिवो तार मते को एई ऑब्जेक्ट रो एक्सेलरेशन का से समान हे जीवो ना -g से समान हे जो दैट इज -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हे जीवो ताले जतरा कोन से बॉल टाकू कोन करिवा ना हमें ऊपर को फोपाडिवा ताले तार जी वैल्यू कोन हिजबो ना नेगेटिव हिजबो आ जतरा कोन से एठी मते आउरी गुटे क्वेश्चन हे परिबो जे व्हेन द बॉल इज कमिंग डाउनवर्ड जतबेले मैं एठी क्वेश्चन रे चेंज कर देबी व्हेन द बॉल इज कमिंग डाउनवर्ड ताहले मते को द वैल्यू ऑफ जी केते हिजबो ना पॉजिटिव हिजबो किन से एठी कहिछि को द वैल्यू ऑफ जी कहां पई पचारछि ना व्हेन द बॉल इज थ्रोन ऑफ तो व्हेन द बॉल इज थ्रोन ऑफ मींस जी केते कोन हिजबो ना नेगेटिव आ जत तळु आसीबो पॉजिटिव क्लियर तापर चलो क्वेश्चन नंबर 7 कोन कहूची व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटी हमें कहा को हम दी प्रकार क्वांटिटी जानथि ओटे फंडामेंटल क्वांटिटी आउट होची को हमर डिराइव्ड क्वांटिटी तो फंडामेंटल क्वांटिटी होची को ना जो क्वांटिटी को हमें आउ कहा द्वारा एक्सप्रेस करि परिबा नाही कि डिराइव भी करि परिबा नाही ताको हमें कहबा फंडामेंटल क्वांटिटी जोडा होची फिक्स तो जानी थी वो जो सातटा फंडामेंटल क्वांटिटी और दीटा सप्लीमेंटरी फंडामेंटल क्वांटिटी जो अछि तो से नोटा को फिक्स किंतु डिराइव्ड क्वांटिटी अछि कोन ना दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड व्हाट डिराइव्ड क्वांटिटीज दैट मींस दी जो फंडामेंटल क्वांटिटी अछि कोन फिक्स मतलब को आ भीतर कहार क्वांटिटी फिक्स बा जहार यूनिट मध्ये फिक्स कहार ना टाइम रो तो टाइम टा गुटे अछि फंडामेंटल क्वांटिटी तो जानी थी वो टाइम हे जाऊ मास हे जाऊ लेंथ हे जाऊ इलेक्ट्रिक करंट आउटा कोन इलेक्ट्रिक करंट एंड टेंपरेचर आउटा कोन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आउ कोन लुमिनस इंटेंसिटी तो ये जो सातरा रहला ये सातरा होची फंडामेंटल क्वांटिटी आ सदा और दीटा सप्लीमेंटरी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर सो से कथा को कोन कहा जाए ना प्लेन एंगल आउट होची सॉलिड एंगल बुझेला कि नहीं किंतु ये जो वॉल्यूम रहिला वेलोसिटी रहिला फोर्स रहिला एडा सब कोटू डिराइव कराई छी ना फंडामेंटल क्वांटिटी जो डिराइव कराई सेथे में समान को कहा जाए डिराइव्ड क्वांटिटीज कोन कहा जाए डिराइव्ड क्वांटिटीज क्लियर तापर आसे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 मतलब क्वेश्चन नंबर 8 कौन कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी मतलब फास्ट को लुमिनस इंटेंसिटी रा गोटा होची कौन फंडामेंटल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कोडा लुमिनस इंटेंसिटी मते को लुमिनस इंटेंसिटी रो यूनिट कौन ना कैंडेला मन रखियो लुमिनस इंटेंसिटी रो यूनिट कौन कैंडेला मोल टा कार यूनिट ना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस amount of substance ampere कार electric current kelvin कार ना temperature kelvin कार यूनिट temperature बुझा कि नहीं तो ऐसा मन रखियो सो दोज ऑल आर ए जो जति सो लिखिली दोज ऑल आर व्हाट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एवं सेमानकर यूनिट को कोन को हबो फंडामेंटल यूनिट्स हला क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 कोन कोई देखो पले क्वेश्चन नंबर 9 टिके करेक्शन करियो एठी ये एडा हबो सरफेस टेंशन इन ए लिक्विड इज ड्यू टू एडा आसीबो अनबैलेंस्ड cohesive force question टिके करेक्शन करियो अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स खाली लिखियो जे अनबैलेंस्ड कोहेसिव आउ गोटे ऑप्शन लिखा हबो अनबैलेंस्ड आधेसिव हला तो दीटा खाली माने खाली चेंज करिया हमें हला ऑप्शन टी भूल अछि तो ऑप्शन टी हमें चेंज करिया तो फर्स्ट हो जे आसीबा अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स और अनबैलेंस्ड एंड आधेसिव फोर्स राइट तो फर्स्ट देखा जाओ कोहेसिव फोर्स हो जे कोन ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स and the force of attraction between the different molecules is called what adhesive force. Now tell me surface tension मतलब को surface tension means tension produced in the surface of the any liquid ताको कहा जाए surface tension एवं surface tension कौन पाई produce हुए ना due to unbalanced cohesive force पाई produce मन रखियो surface tension in liquid is due to unbalanced cohesive force ताले कोड ऑप्शन A. And due to surface tension water droplet are spherical in nature that due to which reason that due to surface tension. Now you can see the small insect can walk on liquid surface. Why the small insect can walk on liquid surface? Due to surface tension, because due to surface tension water surface by any liquid surface behaves as a elastic stressed membrane, as they are behaves like a elastic stressed membrane. So that's why elastic state, that's why all the small insects can walk on liquid surface or any water surface, right? Then question number 10 को आसो question number 10 कहिजी qualitative definition मन रखिबो qualitative definition होची न्यूटन फर्स्ट लॉ आउट अछि quantitative definition आ quantitative definition होची के quantitative definition of force तो मतलब को quantitative definition of force was given by Newton's second law and qualitative definition of force is given by Newton first law. Clear? And you know Newton first law को कहा जाए law of Galileo and also it is called what? Law of inertia. Law of inertia, right? Then question number 11 कौन कोची ना which are not vector quantities अब इधर कोडा वेक्टर क्वांटिटी नहीं मन रखिबो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी मतलब फर्स्ट वेक्टर क्वांटिटीज माने कौन वेक्टर मींस बोथ मैग्नीट्यूड एंड कौन थिबो डायरेक्शन बोथ मैग्नीट्यूड थिबो आ कोन थिबो डायरेक्शन थिबो ताको हमें कोन कहबा ना ताको हमें कहबा होची वेक्टर क्वांटिटीज राइट ना आको भीतर कोडा वेक्टर क्वांटिटी नो जे मोमेंटम दा उडा वेक्टर क्वांटिटी फोर्स भी उडा वेक्टर क्वांटिटी इंपल्स भी उडा वेक्टर क्वांटिटी बट इनर्शिया इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी जे स्केलर क्वांटिटी राइट सो आवर ऑप्शन ता कोन हबो ना इनर्शिया ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर राइट क्वेश्चन नंबर 12 को चलो
क्वेश्चन 12 कौन कहूँ देखो ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इज r द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर ए हाफ सर्कल वुड बी द डिस्प्लेसमेंट देखो ये गोटा होची द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ सर्कल मत कहो ये होची मोर कौन सेंटर ये होची मोर कौन सेंटर ये होची मोर कौन मोर सेंटर मत कहो ये जरी सेंटर C ये होची R ये भी कौन हिजिबो R हिजिबो तो क्वेश्चन कही कौन ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ from initial to final that means half circle this is initial to final a particle is moving in a circular path of radius r the displacement after half circle displacement after half circle केते हबो मते को displacement होची कोन एटा तार displacement हबो तो एटा displacement ताले केते हिजिवो ना सर displacement हिजिवो 2r तो ऑप्शन कोडा हबो 2r is the correct answer but जदि एटी displacement न पजे displacement होची कोन the shortest path covered by an object the shortest path covered by an object is called what displacement if question has asked to find out you can say distance so distance kete hobo tell me now distance kete hijibo na sir distance hochi kete mate ko 2 pi r hochi full circle pai 2 pi r ये कौन हाफ सर्कल कही तमे 2 pi r by 2 तमे 2 to get cancel ताले मते को डिस्टेंस केते आसीबो pi r डिस्टेंस केते आसीबो pi r बुझे लागेनी तो डिस्टेंस होची को द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट क्लियर और नॉट एंड फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ यू हैव टू टेक द रेडियस हियर सॉरी डायमीटर you have to take the diameter so diameter is the displacement now what is distance is the circumference तो whole total ले कितने जो 2 pi r but half circle कही छी 2 pi r by 2 is how much pi r clear now next 13 number question the numerical ratio of a displacement to distance for a moving object now see here question is given that is a distance and displacement already I have told you distance is what total path covered by an object and what is displacement the shortest path covered by an object now see here always distance is greater than equal to displacement always याद रखिबो जे distance is always greater than equal to displacement सब बड़े distance बड़ा होबा काटा displacement हो equal भी होबो distance is equal to displacement कितना होगा ना when the particle is moving in a one direction or in a straight line path when the particle is moving in a one direction or straight line path then your distance is equal to what displacement but always remember distance is greater than equal to what displacement right now see एटी पचारची कोन ना न्यूमेरिकल रेशियो पचारची कहार डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रो पचारची ता माने एया जे डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू कोन हिजिवो डिस्टेंस ता माने एया जे डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस इज लेस देन इक्वल टू कोन हिजिवो 1 ता माने मते कहि परिबो कि ऑप्शन कोडा हबो जे डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस इज लेस देन इक्वल टू 1 ता लेस देन इक्वल टू 1 कोडा अछि एडा इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1 दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट बुझला क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन ऑफ 14 कौन कौन देखो ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जा पाखरे बोथ मैग्नीट्यूड थिबो डायरेक्शन देता को हम कौन कहया वेक्टर बोली कहया सिंपल क्वेश्चन वेक्टर तो वेक्टर एग्जांपल कौन कौन व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर वेक्टर एग्जांपल कौन कौन हो परिबो ना डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी acceleration momentum
force, etc. So those are the examples of vector quantities, right? And only magnitude, not direction. Scalar hochi kon na only magnitude, but not direction. ताको आमे कोन कहिबा ना स्केलर क्वांटिटी बोली कहिबा, ठीक अछि। तो स्केलर क्वांटिटी के के डिस्टेंस, स्पीड, you can say work, energy, heat. So those are examples of what? Scalar quantity, right? ताले पिले एटा कोन हबो? Vector quantity. Clear? Question number 15. Question number 15 आसो कहि the slope of velocity time graph पचारछि velocity time graph रो slope तामाने ये होछि मोर velocity, ये होछि मोर time एवं ये होछि तार डायग्राम आसीयो हा कि नहीं। तो velocity time graph slope मते कोन देखिबो मन रखिबो acceleration। तीनटा जिंस मन रखिबो, तीनटा जिंस रो क्वेश्चन आसे, तीनटा जिंस कोन कोन ना फास्ट मन रखिबो जे डिस्टेंस टाइम ग्राफ तुमको कौन दबो ना स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ रो स्लोप। तो डिस्टेंस टाइम, that is I can write slope of distance time graph, slope of distance time graph तुमको कौन दबो स्पीड दबो। सेकेंडरी slope of displacement टाइम ग्राफ तुमको कौन दबो ना वेलोसिटी, मन रखियो। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम का कौन दबो तुमको वेलोसिटी दबो। 3 नंबर मन रखियो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी और टाइम ग्राफ तुमको कौन दबो ना एक्सेलरेशन, मन रखियो कौन दबो एक्सेलरेशन। 4 रे आउ गोटे जिनस मन रखियो कौन ना एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुमको कौन दबो ना डिस्प्लेसमेंट, कौन दबो डिस्प्लेसमेंट। बुझे कि एति जिनस मन रखियो। 4टा जिनस मन रखियो, 4टा जिनस क्वेश्चन पचारियो। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होची कौन मोर वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ होची एक्सेलरेशन एंड एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुम कौन दबो डिस्प्लेसमेंट, राइट। चला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कही क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कौन कहला ना बॉल बियरिंग इज यूज्ड फॉर, बॉल बियरिंग हमें कौन पर यूज करिया ना बॉल बियरिंग इज यूज्ड फॉर आर बहुत इजी, माने एटा बहुत इजी क्वेश्चन। कौन पर यूज करा जे बॉल बियरिंग मन रखियो फॉर रिड्यूस फ्रिक्शन। तमाने फॉर रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करिया पाई हमें कौन यूज करिया बॉल बियरिंग, राइट। For reducing friction we are using ball bearing. Clear? Then question number 17. Question number 17 गोटे problem अछि। Question number 17 कौन को देखो कहला a body of mass 25 kg, तमाने body of mass केते mass होची 25 kg। कौन कहला इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, इज प्लेस्ड ऑन ए ये गोटे हॉरिजॉन्टल सरफेस एवं ये होची कौन गोटे बॉडी जहार कि मास होची केते ना 25 kg। नाउ हु द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.25, तमाने आर जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन दैट इज म्यू, ए म्यू डा होची केते ना 0.25। क्लियर? से कहि फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट,
you have to take G equal to कितना 10 meter per second square. You have to calculate the frictional force here. So how to calculate frictional force here? Now you can see mass given 25 kg and mu also given, that is 0.25 kg. 0.25 kg. ताला मतलब frictional force of formula कौन है जो ना mu into n, that is normal reaction. Now when the body is at rest, this weight और जो weight अच्छी W equal to कितने mg, W equal to mg weight, ये कहाँ से तो बराबर होगा ना normal reaction से तो बराबर होगा. कहाँ से तो बराबर होगा normal reaction से तो बराबर होगा. ठीक है जी नहीं? ताले ऐठी देखो मते कोई जो n जगह में कौन put कर परिवी ना this W equal to mg, that is n equal to कौन लिख परिवी mg लिख परिवी. तामाने दिस फॉर्मूला टा कौन हिजो ना f equal to mu into n जगह कौन हिजो w equal to mg, that is m into g. ताले mu केते ना 0.25 and what is mass 25 and what is g, that is 10. ताले केते आसी हम तो आपको कैलकुलेट कर ले you will get 62.5 न्यूटन. केते भाई वो 62.5 न्यूटन. क्लियर or not? बुझेला कि नहीं? ये होची फ्रिक्शनल फोर्स रो फार्मूला मन रखिबो F equal to mu into n. लिखि दियो खाता रे F equal to mu into n and what is n here? n टा मन रखिबो नॉर्मल रिएक्शन. Normal reaction. And what is normal reaction? And remember, normal reaction is always acting normal to the surface. Always acting normal to the surface, right? But that means which is perpendicular to the surface. Which is perpendicular to the surface. Clear? Question number 18 को चलो है. Question number 18. 18 कौन कोई चीज? The rate of change of linear momentum, the rate of change of linear momentum of a body falling freely under the gravity is equal to its, the rate of change in momentum, the rate of change in linear momentum of a body falling freely under gravity is equal to its what? Is equal to its, देखो rate of change in linear momentum कही छी एवं से कौन करछि under the gravity माने कौन gravity अनुसार से तळु खसछि. क्लियर? से कही ए जे रेट ऑफ चेंज टा कहां सहित इक्वल हबो, रेट ऑफ चेंज टा कहां सहित इक्वल हबो 18 नंबर के कोई परिबो 18 नंबर. क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहां से समान हबो एनीवन? ये समान हबो कहां से ना इंपल्स सहित. पचरे सर काहे केमति हला इंपल्स सहित काहे समान हला? सी हियर नाउ दिस impulse that is I can be written as, that is F, that is impulsive force, F टा is impulsive force into dt. What is dt here? That is small change in time. That means impulse हमें कहाँ कहवा ना जदि गोटे large force कौन सोटे body ऊपरे किसी समय पे लागुची ताले ताको हमें कौन कहवा impulse बोली कहवा. Clear? Now see ये जो impulse कहाँ सहित समान मन रखिबो, this impulse is equal to कहाँ से समान ना change in momentum सहित समान. कहाँ सहित ना change in momentum सहित समान. Change in momentum सहित समान. So now ये देखो rate of change in linear momentum कही ता rate माने dt टा को जदि एपड़ को नहीं जीवी ता माने मते को impulse कौन ही जीवो ना impulse ता माने जो dt टा को जदि मो एपड़ को नहीं गली, that is dt, तार मते को ए जे टोटल टा कोन हबो इंपल्स हबो कि नहीं? तार मते को तार कहां से तो समान होई जे इक्वल टू इट्स कहां से समान हबो ना त इंपल्स से तो समान हो. बुझेला कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 कोन कहि छी? स्प्रेयर फंक्शन, स्प्रेयर केमिति फंक्शन करे ना को प्रिंसिपल अनुसार मन रखिबो, को प्रिंसिपल से काम करिवो. दिस इज बर्नौलीज प्रिंसिपल. मन रखिबो को प्रिंसिपल बर्नौलीज प्रिंसिपल. ताले क्वेश्चन नंबर 20 चलो.
क्वेश्चन नंबर 20 कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिजल्टेंट ऑफ सरफेस टेंशन आ भीतर कोउटा सरफेस टेंशन रो रिजल्ट मन रखिबो कैपिलरी एक्शन तो कैपिलरी एक्शन होची कोन एटा सरफेस टेंशन रो गोटे कोन रिजल्ट बुझिला कि नहीं ता माने या कैपिलरी एक्शन डिपेंड करची सरफेस टेंशन ऊपर तापर क्वेश्चन नंबर 21 कोन कहिछि ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज मोस्ट विस्कस आ भीतर कोउटा होची मोस्ट विस्कस दैट इज ऑयल which of the following liquid is the most viscous that is nothing but what oil बुझे लगे नहीं तापरे क्वेश्चन नंबर 22 को देखो क्वेश्चन नंबर 22 कौन कही छी that the surface tension of a water on adding detergent जे तमे डिटर्जेंट ऐड करछो वाटर रे ताले तो सरफेस टेंशन कोन हो कमिबो ना बढ़िबो ता सरफेस टेंशन कमी जीवो दैट इज डिक्रीजेस सरफेस टेंशन डिक्रीजेस क्लियर क्वेश्चन नंबर तापर चलो 23 क्वेश्चन नंबर 23 कौन कहूची ना इफ एन ऑर्डिनरी ग्लास ट्यूब एंड ए ग्लास कैपिलरी ट्यूब जदि गोटे ऑर्डिनरी ग्लास ट्यूब नेलो आ गोटे ग्लास कैपिलरी ट्यूब नेलो देखो कैपिलरी ट्यूब हमें कहा कहबा ना जार रेडियस स्मॉल होतिबो व्हाट इज कैपिलरी ट्यूब ना जार रेडियस स्मॉल होते तो हमें कहबा कैपिलरी ट्यूब ताले इफ ऑर्डिनरी ग्लास ट्यूब गोटे नबो आ गोटे कोन नबो ग्लास कैपिलरी ट्यूब नबो एवं ताको बोथ को कोन करिवो डीप करिवो वाटर रे से कहि छी वाटर राइजेस इन वाटर कोडी राइज करिवो कोथरे राइज करिवो मतलब के डीटा करे वाटर कोन करिवो राइज करिवो ता माने बोथ हबो ऑप्शन कोन हबो ए दैट इज बोथ तमे दीटा जाकरे कोन हबो ना वाटर कोन करिवो राइज करिवो दीटा जाकरे वाटर कोन करिवो राइज करिवो ठीक अछि तापर आसो क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्वेश्चन नंबर 24 टा होची ए जो कहि छी जो क्वेश्चन नंबर 24 कहा प्रिंसिपल अनुसार काम करिवो मन रखिबो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखो क्वेश्चन पढ़ा जानी परिवो क्वेश्चन कहि छी को क्वेश्चन कहि छी जे ए बॉम्ब at rest explodes into a large number of tiny fragments ओटे बॉम्ब थिला त जेटा बॉम्ब ता थिला ता इनिशियल मोमेंटम केते थिला 0 थिलो बॉम्ब ता फाटी सला परे into a large number of tiny fragments छोटो खंड रे कोन हैला परिणत हेला the total momentum of all the fragments से क्वेश्चन पचार जे टोटल मोमेंटम ऑफ द ऑल द फ्रैगमेंट्स कोन रहइबो ना कांस्टेंट ही रहइबो दैट मींस 0 इज 0 ऑप्शन ए काहे की बिकॉज़ दिस इज द कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सो व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कोन कहूची ना कंजर्वेशन मोमेंटम कहूची मन रखिबो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड और यू कैन से द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज कांस्टेंट that means initial momentum is equal to final momentum तार कंडीशन कोन कहूची there is no force applied external force तमे किछि अप्लाई करिवो नाही so that's why I am telling you for an isolated system what is the meaning of isolated system means there is no external force isolated system means there is no external force you can see here F equal to dp by what dp Newton second law F equal to dp by dt Newton second law. So this F is the F external force. Now for an isolated system external force is what 0. त माने ये जदी 0 हो गला त माने dp by dt कोन हे जिवो त माने dp equal to कोन हे गला 0 त माने dp जदी 0 हो गला त माने देखो p कोन हे जिवो dp जदी 0 ताले p कोन हे जिवो कांस्टेंट त माने जो p कांस्टेंट रो मीनिंग ता होची कोन दैट मींस बिफोर total momentum is equal to after total momentum तमने मोमेंटम कोन होची कांस्टेंट होची बा कंजर्व होची बुझा लगे नहीं अरे बुझबा लगे नहीं दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बुझा लगे नहीं तो कंजर्वेशन मोमेंटम कोन लिखि दियो कंजर्वेशन मोमेंटम कोन फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड तापर आसे क्वेश्चन नंबर 25
क्वेश्चन नंबर 25 कौन कहूची the energy relationship कही तो mass energy relationship होची कोटा ना E equal to mc square so कहे mass energy relationship is the outcome of ये जो E equal to mc square को थ्योरी आसी मन रखिबा आइंस्टाइन गोटे थ्योरी पब्लिश करथिले दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो दीटा आइंस्टाइन का दीटा ही थ्योरी थिला गोटे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आउट होची जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मते को जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रे आइंस्टाइन कहितले का विषय ना E इक्वल टू mc स्क्वायर विषय रे बट जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रे आइंस्टाइन का विषय कहिसंती ग्रेविटी विषय कहिसंती का विषय कहिसंती ग्रेविटी विषय रे तो मते को ए जो मास एनर्जी रिलेशनशिप इज द आउटकम ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कौन हबो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्लियर तापर क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ दियो जे कहिछि an oil drop spreads over the water because an oil drop is spreads over the water कहीं की स्प्रेड करे ना ता ऑप्शन कोन हो ता ऑप्शन एठी अछि कहिछि क्वेश्चन कही कहीं की स्प्रेड करे गोटे ऑयल ड्रॉप बिकॉज सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज मच स्मॉलर कहीं ना सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल टा होची कोन बहुत स्मॉल तो सेथि पई ऑयल स्प्रेड्स ऑन वाटर सरफेस राइट सो एटा कोन हो ऑप्शन डी देन क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 आर एल ऑप्शन डी सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ द वाटर क्वेश्चन नंबर 27 को द सडन फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट्स मतलब को तीनटा जिंस मन रखियो हमर एटमॉस्फेयर प्रेशर को केमती मेजर करा जाय बाय द हेल्प ऑफ बारोमीटर सो बारोमीटर इज ए प्रेशर मेजरिंग डिवाइस व्हिच प्रेशर मेजरिंग डिवाइस एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस तो बाय द हेल्प ऑफ बारोमीटर वी कैन मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाउ सी तो एटमॉस्फेयर प्रेशर केमती मेजर करबा बारोमीटर मन रखियो बारोमीटर मत कह जदि बारोमीटर रीडिंग जदि सडनली फॉल हो तीनटा जिनस मन रखियो जदि मोर सडनली फॉल हैला बारोमीटर रीडिंग जदि सडनली फॉल हो जी ताल देखो हमें कोन कहबा ना स्ट्रोम बोली को आजिवो कोन को आबो स्ट्रोम सेकंड जदि स्लोली फॉल हो जी जदि मोर स्लोली फॉल हो जी ताल देखो आबो रेन वर्षा आबार संभावना अछि और जदि मोर राइज करूची ताले आपको कौन कहबो ना प्लीजेंट वेदर मींस कौन भलो वेदर अछि बुझिला कि नहीं ता मतलब तीनटा से मन रखियो जदि सडनली फॉल करची स्ट्रोम जदि माने स्लोली फॉल करची ताले रेन और जदि माने पूरा ऊपर को उठुची राइज करची ताले कमे कोन कह प्लीजेंट वेदर ठीक अछि ताले एटा मते को द सडन फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट्स व्हाट स्ट्रोम तो हमें कौन कहबा स्ट्रोम क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 30 टा क्वेश्चन डिस्कशन करिबा क्वेश्चन नंबर 28 कौन कहि छी हाइड्रोजन बैलून फ्लोट्स ऑफ बिकॉज ऑफ जो हाइड्रोजन बैलून अछि से फ्लोट करे काहे की because the weight of the balloon is less than the weight of the air displaced by it एठी को प्रिंसिपल लागु छै ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल लागु छै बुझिया कि नहीं ताले कोडा हबो ऑप्शन सी कोडा पिले ऑप्शन सी ताले weight of the balloon is less than the weight of the air displaced by it तापर नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 29 कौन कहि देखो कही द एनर्जी स्टोर इन ए वॉच स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग रे को प्रकार एनर्जी स्टोर रहे मतलब को मैकेनिकल एनर्जी दी प्रकार कौन कौन मैकेनिकल एनर्जी आर ऑफ टू टाइप्स वन इज काइनेटिक एनर्जी वन इज पोटेंशियल एनर्जी देन व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ना जदी कौन से बॉडी कौन करछि मोशन करछि ताले से को एनर्जी पोजेस करछि ना काइनेटिक एनर्जी पोजेस करछि
आ जदि कौन छोटे ऑब्जेक्ट किसी हाइट रे अछि ताले से को एनर्जी पोजेस करछि ना होछि पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करछि को एनर्जी पोजेस करछि पोटेंशियल एनर्जी ताले मते को मैकेनिकल एनर्जी दी प्रकार ओटे होछि काइनेटिक एनर्जी ओटे होछि को पोटेंशियल एनर्जी ताले मते को एठी कहला द एनर्जी स्टोर्ड इन ए वाश स्प्रिंग रे को प्रकार एनर्जी स्टोर हे रहउछि मन रखिबो पोटेंशियल एनर्जी को एनर्जी स्टोर हे रहउछि पोटेंशियल एनर्जी बुझिया कि नहीं तो पिले आज पई एति की नेक्स्ट क्लास बा नेक्स्ट आई थिंक जेबे क्लास पढ़िबो आमे आउ किछि न्यू क्वेश्चन डिस्कशन करिया तो आज जे क्वेश्चन पढ़ा हला आज क्वेश्चन देसी डिस्कशन करा ताउ डी देखो भला बारे भला बुझाबो ट्राई करो ठीक अछि तो थैंक यू ऑल ऑफ यू